Question number 2 from factorization. Now this one is based on this identity, children, that you've studied. Square of one number minus square of the other number can be written as sum of those numbers into difference of those numbers. Okay, so as we see, the two terms given here are perfect squares. This is 2p's whole square. Okay, इसको whole square form में पूरे का square करके लिखना है आपने. 9 is 3 square, so we can write this as 3q whole square. So now your A is 2p and your B is 3q. So A square minus B square is A plus B. So 2p plus 3q and 2p minus 3q by this identity. Okay. So इसमें बस आपको trace करना है कि किसका square है ये, the whole thing जिसका square है वो the first number and second number, and then put it in identity. Like in this one now, of course you have 16x to the power of 5, 144 x to the power of 3. Now these are not squares, odd powers हैं, but what are we observing is that we've studied the first trick of factorization, that was taking common. So इसमें common लिया जा सकता है, so we will take whatever can be taken common. So this is also a factor of 16, so 16 can be taken common. Then out of 3 and 5 x's, 3 x's can be taken common. So out of 5, 3 gone, we are left with 2 x's inside. So x square, and 16 9s is 144. So 16 common leke 9 remains. Now these are perfect squares. We can write this as x whole square and this one as 3 square. So again applying the identity, this becomes a plus b, a minus b. So these all are your factors. Now in the fifth one you have L plus M whole square. This is already given to you in a square form and a minus sign in between with L minus M whole square. So it is of the form of the identity. Okay, we can already see that this is of the form A square minus B square. Okay, where your A would be, as I have written here, L plus M, and your B would be L minus M. So A plus B and A minus B. So A is L plus M plus B is L minus M. Likewise A minus of B. Now remember to put this B in bracket, children, otherwise you are likely to make sign mistake, because minus की वजह से signs alter होते हैं. तो वो sign of all the terms inside will be altered. So you'll keep a small bracket here, then you'll open it. Okay, or या mentally कर सकते हो तो well and good, but to avoid mistakes it is advised that you should keep first bracket and then open the bracket, तो automatically सही आता है. So here this becomes L plus M plus L minus M, and here this is L plus M. This will become minus L now, and minus minus will make this plus M. Okay, so what is happening is minus M plus M is getting cancelled here, minus L and plus L is getting cancelled here. So here L plus L becomes 2L in this bracket, M plus M becomes 2M. Bracket means multiplication, so that is 2 2s are 4, LM is your answer. Next one, seventh one, x square plus 2xy, minus 2xy plus y square. This is your identity straight away, children. We have this identity, a minus b whole square has these three terms, square of the numbers and minus 2 times the product. तो वही form आ रही है यहाँ पे. So this becomes x minus y's whole square. These three terms together can be written as x minus y whole square. Then we had a minus of already a z square here. Now this is satisfying this form. It is square of one number minus square of the other number, which has factors as sum of those numbers into difference of those numbers. So a की जगह था x minus y plus b की जगह है z, x minus y minus of z. Okay, so all unlike terms, तो इनमें हम कुछ plus minus नहीं कर सकते हैं. We'll write them next to each other. So x minus y plus z one factor, x minus y minus z the other factor. Okay, the last one we are seeing again squares out here. 25a square, this is 5 square, 4b square, ये भी perfect square है 2b का. 49 is also a square of 7, but these squares out here are negative, and squares can never be negative because square means number अपने आप से multiply हुआ है, and अगर negative number भी अपने आप से multiply होता है तो minus multiplied by minus makes it positive. So squares, children, in real numbers are never negative.
तो हमने क्या करना है, इन स्क्वायर्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा टू मेक इट सेंसिबल. सो व्हाट आर वी डूइंग इज फ्रॉम द थ्री टर्म्स, लास्ट थ्री टर्म्स वी आर टेकिंग माइनस साइन कॉमन टू मेक आवर स्क्वायर्स पॉजिटिव. ओके, तो फर्स्ट नंबर तो हमने परफेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया 5a का होल स्क्वायर. ओके, एंड देन minus taken common, this will become now positive 4b square which can be written as 2b's whole square. और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है. ओके, सो माइनस माइनस हैज टू मेक इट पॉजिटिव. सो दिस नंबर प्रोडक्ट टर्म बिकम्स नेगेटिव 2 फ्रॉम द आइडेंटिटी. ए हमारा 2b था, अभी लास्ट टर्म था 7c का होल स्क्वायर. ओके, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया बिकॉज नेगेटिव हैज बीन टेकन कॉमन. सो हमारा b क्या आ गया 7c, तो यहाँ पे आप 7c रख दोगे b की जगह. a was 2b. अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28. सो दैट 28bc कैन बी स्प्लिट एंड रिटन एज 2 इंटू a इंटू b. तो ये फिर आइडेंटिटी बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a माइनस b's होल स्क्वायर. सो a माइनस b's होल स्क्वायर ब्रैकेट में. ओके, अब वापस वही फॉर्म आ गया, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर. सो यू कैन अप्लाई दैट आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो एक बार ऐड कर देते हैं, ए इज 5a, बी इज दिस होल, ये ऐड हो गया. देन ए माइनस, अब माइनस करोगे तो इनके साइन ऑल्टर हो जाएंगे. अभी जैसे ऊपर मैंने ब्रैकेट में दिखा के फिर खोला था, यहाँ पे आई हैवंट शोन द ब्रैकेट, आई हैव डन इट स्ट्रेट अवे. दोनों के साइन चेंज कर दिए माइनस से, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया. सो दीज आर योर टू फैक्टर्स. ओके.